Good mor- Good morning, friends. Good morning, everyone. Now, wishing all of you happy Gudi Padwa and also चैत्र नवरात्रि। नाउ आज हम लोग एनालिसिस करेंगे व्हाट विल हैपन इन द मार्केट इन द अपकमिंग वीक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं निफ्टी। नाउ निफ्टी की सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि व्हाट विल हैपन इन द मार्केट इन अपकमिंग वीक। सो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी, वी विल अप्लाई इचिमुकु हियर with a settings of 18, 26 and 52. Now, in weekly time frame, Nifty has given close when Nifty has given it is your conversion line, rate is baseline. So when Nifty has given close above conversion line and here it has given close below this line एंड इसके नीचे कोई कैंडल की क्लोज नहीं हुई है, इट मीन्स दैट इट हैज नॉट अ वेरीफाइड सेल सिग्नल हियर, इट इज नॉट अ वेरीफाइड। नाउ सिमिलरली निफ्टी हैज क्लोज्ड हियर बिलो, बट this candle closes below of this, and then after retracement it has given a super low. Now after a long time Nifty has given from 21st October to this 17th March, within a period of 6 months Nifty was below conversion line, means after 147 days it has given right now close above this conversion line. What does it indicate? It indicates that there is a chances of right now reversals from there. मतलब if you will analyze here, Nifty is exact at the resistance level. From there, it has taken resistance and exact at that level right now, and it has closed and it has made a bearish candle here. Now, it also indicates that last week market में weakness थी. Market was not in a strong condition like this strong condition. It also indicates there is weakness in the market. Now, if you will analyze on 1 day time frame, it has given close of this and right now it is up. But exact right now Nifty is here. Entire it has made a round pattern and it is at there. And after this it has taken resistance and right now it starts falling. So two things can be happen from here. First, if Nifty forms cup and handle pattern here, so Nifty can come to 22917 from there, and again it will make a upside superb reversal. And if Nifty gives
closing above this level, and on retracement it will move upside to 25,200. Now, Nifty, an important astrological date was solar eclipse was on 29th March 2025, and important astro date is 27th March at 10:10. Now, so astro date impact will be on 28th March. Mark 28th March high and low, and then take the trade. What you have to do here, you have to mark 28th March high and low, and whichever side market breaks, take the trade. Whichever side market breaks and closes, take the trade. But right now, possibility of Nifty reversal from 28th March is more. Nifty may retrace from there to 22904 level. This is an important level where Nifty can take support. Now, similar Bank Nifty. Bank Nifty has given super breakout here above this level. And if it has given super breakout here, price is retracing. If price retraces to this level 50600, there is a possibility to go up till your 52,000. Nifty will go up. But if सॉरी बैंक निफ्टी, लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहां से नीचे आ जाती है, अगर ये यहां से नीचे क्लोज करती है, देन आफ्टर रिट्रेसमेंट इट मे कम टू दिस लेवल 49883. निफ्टी की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की लेवल है जो यहाँ पर है, वेयर ओ सॉरी मतलब बैंक निफ्टी की, वेयर बैंक निफ्टी स्टैंड्स राइट नाउ. बैंक निफ्टी ने अभी तक इसके नीचे उसने क्लोजिंग करा है, एंड आफ्टर क्लोजिंग हियर below this level it has done exact retracement, and now this entire fall, and the fall continues. This is the entire pattern right now Nifty is following. So chances of Bank Nifty, again here history repeats itself. Again here same pattern is forming there. If the pattern confirms, there is a chances of Bank Nifty to come down. If it has not given any candle close above this daily candle close, chances of Bank Nifty to come down from here. Means what has happened here on 19 December 2024, right now market is at the same condition on 25th March, and it has formed this kind of pattern again after taking retracement from this resistance level. Right now Bank Nifty started moving downwards. Now, so important astrological date is 28th March. 28th March high and low will totally decide market direction for the next week और द फॉर द अपकमिंग मंथ. अच्छा, अपकमिंग मंथ के लिए मैंने एक एनालिसिस करी है.
whose video already uploaded in this Telegram. This is my video. Gann and Hurst weekly forecast from 10th March to 14th March. You can go and watch this recording. What will happen for the entire year? Where from Nifty will be bullish and will be in momentum? It is completely depicted in this video. You can go and watch there. आप जा करके देख सकते हैं. गैन एंड हर्स्ट वीकली फोरकास्ट फ्रॉम 10th March to 14th March. Total scenario has been mentioned in this video. Now, it is the entire picture of Nifty and Bank Nifty exact at resistance level, and Nifty reversal time is 27th March, and right now it has started moving downside. And so इसकी जो रिवर्सल डेट है, अगर रिवर्सल डेट 28 मार्च के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर देती है, पॉसिबिलिटी ऑफ निफ्टी रिवर्सल टिल योर नेक्स्ट 700 पॉइंट्स on the card. Now, I have already discussed in this video here. I have already discussed कि 2025 में कहां पर मोमेंटम हो सकती है, कहां पर मोमेंटम नहीं हो सकती है, किस टाइप मतलब किस डेट की ओर फ्रॉम योर WD कैन एंड हर साइकिल ये किस डेट की ओर इंडिकेट कर रही है. आई हैव ऑलरेडी मेंशन देयर. Now, it is WD. It is my her cycle analysis pattern. It is my WD can analysis time cycle. Now, निफ्टी की कल के लिए टुमारो फॉर 31st मार्च वीकली फोरकास्ट है. निफ्टी की जो क्रूशियल गैन combo points number is 23539. It is crucial number. It is for your 31st March. 31st March. I every day post all these labels in my Telegram. All these labels in my Telegram. Every day early morning I post in my Telegram. टेलीग्राम की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है. हियर आई हैव पोस्टेड निफ्टी गैन कॉम्बो पॉइंट्स highly bullish above this number. This is your target. Highly bearish below this number. This is your target on the cards. Similarly for your bank nifty, similarly for fin nifty, similarly for sensex. Highly bullish number is 77. So कल के लिए for tomorrow, Nifty, if any 15 minutes candle closes above 23584, all these targets are on your cards. And if Nifty closes below of this level, any 15 minutes candle closes, all these targets are on your cards. Similarly for Bank Nifty, Fin Nifty, Sensex and all these things. Now, it is my crude bullish and bearish GCP number. How will you take trade? If any 15 minutes candle, no, it is in your crude. So in crude, hourly candle. If hourly candle, here I have mentioned clearly, hourly candle closes above this number. Suppose this is the number 5976. If any hourly candle closes above of this, wait for the retracement to take the trade. All these are your intraday levels. And now you can do another things. Suppose it is your level 5976.
अगर कोई अच्छी सी कैंडल इसको ब्रेकआउट करती है, एंड इफ यू आर नॉट अ कंजर्वेटिव ट्रेडर, यू कैन मैनेज योर रिस्क रिवॉर्ड, सो aggressively you can take trade at the 50% of this candle. What will be your stop loss? When you have taken trade above this level, it is your stop loss level. When you have taken trade below of this level, it is your stop loss. Means salt below, crude oil, salt below, or sir, you can also buy put below 5929. Stop loss is 5964. Target is 5903, 5861, and 5814. Is your target. Similarly for gold and also silver. Now, वीकली रेंज निफ्टी की वीकली रेंज है अपसाइड की 24241, बैंक निफ्टी 52672, फिन निफ्टी इज दिस सेंसेक्स अपसाइड एंड डाउनसाइड वीकली रेंज. अगर निफ्टी सपोज 24241, सपोज आई हैव टेकन हियर बैंक निफ्टी 52672, 52672, 5267, and I have taken here 50497. Yes, 50497. I'm deleting this. Now, अगर निफ्टी अगर बैंक निफ्टी अपसाइड मूव करती है तो टोटल वीकली रेंज इज दिस. You will watch Nifty is continue, Bank Nifty is continue to dance within this range. So you can plan your trade, any neutral trade, hedging trade, or any kind of selling trades between this range for Bank Nifty. Similarly, it is the range for Nifty, in Nifty, Sensex, Mid Cap Nifty, and it is my daily range, which I normally post every day in my Telegram. What is today's Nifty range, where Nifty will move to upside this, downside this, upside this, downside this. It is your daily range. Now, कल के लिए जो हम लोग स्टॉक्स को वॉच करेंगे, इट इज योर कल के लिए टाइटन, इट हैज मेड अ 6 कॉम्बो, 6 कॉम्बिनेशन टाइमिंग, श्री सीमेंट 6 कॉम्बिनेशन, ट्रेंट 5 कॉम्बिनेशन, एसबीआई कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज रेडी टू ब्लास्ट, एंड ऑल्सो पतंजलि इज ऑल्सो रेडी टू ब्लास्ट. सो स्पेशल फोकस ऑन एसबीआई कार्ड एंड पतंजलि. आई एवरी नाउ स्टॉक्स की जो टाइम ना, व्हाट इज इंडेक्स फॉर 31 मार्च, इंडेक्स की जो मैजिकल टाइम होती है, आई एवरी डे पोस्ट दिस मैजिकल टाइम इन माई टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम. ना 5 minutes magical candle in index, it is your magical timing, mark the high and low and take the trade. Every day I post in index 5 minutes मेडिकल. ये मैं स्टॉक्स की जो टाइम होती है, ये मैं अपनी, ठीक है, प्रीमियम कम्युनिटी में देता हूँ. 5 minutes मैजिकल कैंडल इन बजाज फाइनेंस 9:55 to 10. Now 5 minutes magical candle in index 9:35 to 9:40. I have given this on
27th March. So 27th March. 27th March, 9:35 to 9:40, which I have given time there, 9:35 to 9:40. Now, it is your timing candle. Mark the high and mark the low of this candle. It is your timing candle. Now, it has given upside breakout. It has done retracement. Take the trade here. Which type of trade you will take? Take a long trade because it has given upside breakout. It has given 64 points and again it has given 1:3 risk reward. 90 points one side. सो एवरी डे आई पोस्ट. तो कल के लिए जो आपकी मैजिकल टाइमिंग है इंडेक्स में 10:05 से 10:10 AM एंड ऑल्सो 12:05 to 12:10 PM. स्टॉक्स की जो मैजिकल टाइम होती है वो मैं एवरी डे मैं अपनी यहाँ पर प्रीमियम कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ. 5 minutes मैजिकल कैंडल इन टोरेंट फार्मा, 5 minutes मैजिकल कैंडल इन मारुति, ये मैं अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव टेकन हियर मारुति. आई आई हैव पोस्टेड ऑन फ्राइडे. इट इज बिफोर मार्केट ओपन 9 AM. It is your 9:02 AM. I have given Maruti time 9:25 to 9:30. 28, 9:25. This is my timing which I have given 9:25 to 9:30 premium. It has given super breakout and then it has given almost 100 points move. One-sided 100 points move. Maruti has given downside. What you have to do, you can do short future there, or you can also buy put, or you can also sell option there. As per your risk reward, you can do anything. I have given time there, 5 minutes magical candle in Titan. What is the time? Time is 9:55 to 10. 9:55 to 10. This is the timing candle. Mark the high and low. It is your timing candle now. It has given upside breakout, exact retracement. Take the trade here. What kind of trade you will take? You will have to take long trade there. Minimum 1:2 risk reward ratio you will have to maintain. Again it has given downside breakout of this vibration time magical candle. You can watch what a super move it has given one side. What a superb. This is the power of magical and magical candle. Now, again here, I have given Torrent Pharma. Torrent Pharma. What is the time I have given? 10:22, sorry, 10:22, 10, yeah, sorry, 10:20 is my time. 10:20. This is my time. Mark the high and low.
It has given breakout, but it has not done exact retracement. So no problem. You can also find this time. You can also take aggressively trade to get profit in your torrent farm. Now, similarly, कल के लिए इंडेक्स की टाइमिंग है 10:05 से 10:10 एंड 12:05 to 12:10. If one time a stop loss trigger, you can also reverse your trade. Now, now इंडेक्स की जो टाइम है कल के लिए गोल्डन टाइम फॉर इंडेक्स 31 मार्च 9:35 to 9:40 is your golden time for index. March 31st March. Mark this candle high and low and sir, watch the magic tomorrow. What will happen? Now, for XAU USD gold 31st March, magical time is 4:40 to 4:45 AM and 10:40 to 10:45 AM. It is your superb time where market will blast, ready to blast at this time. It is the golden time for XAU USD gold. Next, 5:20 to 5:25 PM and then 7:35 to 7:40 PM. स्टॉक्स की मैं अपनी प्रीमियम कम्युनिटी पेड कम्युनिटी में देता हूँ. इंडेक्स की गोल्ड की मैं अपनी फ्री वहां पर टेलीग्राम में देता हूँ. ना कन्वर्जेंस इंपैक्ट. इंडेक्स की जो कन्वर्जेंस है, निफ्टी प्राइस कन्वर्जेज विथ टाइम but no pattern confirmed here. Now, Nifty price converges with time, but no pattern yet confirmed. Sorry, confirmed की spelling wrong. But no pattern yet confirmed. So I will update in my Telegram when pattern will be confirmed. Bank Nifty price converges, but yet it has not confirmed. If a convergence pattern confirmed, then there will be 300 plus points movements in Nifty one day and आंसर बैंक निफ्टी 800 प्लस पॉइंट मूव करेगी. बैंक निफ्टी कन्वर्जेंस जो होगी वो फिन निफ्टी को भी 300 पॉइंट्स मूव करेगी बिकॉज ऑलमोस्ट कंपोनेंट्स ऑफ बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी आर सेम. नाउ निफ्टी कन्वर्जेंस विल मूव सेंसेक्स टू 1200 पॉइंट्स इन वन डे बिकॉज निफ्टी की चार्ट और सेंसेक्स की चार्ट ऑलवेज सेम एंड सिमिलर मूव करती है. नाउ नेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट. सोलर इक्लिप्स ऑन 29th March. Important astro date 27th March at 10:10. Due to planets coming closer. Now, astro date impact will be on 28th March. Mark 28th March high and low and take the trade. Inside Nifty, Bank Nifty, you can take the trade. Astro date answer solar eclipse date on 31st March. दोनों की अभी जैसे एक से यूएसडी गोल्ड या 50 के एमसीएक्स गोल्ड क्लोज है तो 29th एंड 27 दोनों की कॉम्बो जो इम्पैक्ट होगी इट विल बी ऑन योर Monday 31st March. Mark 31st March high and low in gold and take trade. It will decide a superb move from 31st March. At least gold will move 5,000 plus point on any direction. ये मेरी लिंक है टेलीग्राम की, ईमेल है. इट इज माय कांटेक्ट नंबर. यू कैन आल्सो कॉल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स एनीथिंग. यू कैन कॉल मी.
सो कल के लिए इंडेक्स की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टॉक्स है इसकी टाइमिंग मैं अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में अपडेट कर दूंगा, सो एवरीवन विल गेट दिस टाइम। टाइटन की क्या टाइम है, श्री सीमेंट की, ट्रेंड की, एसबीआई कार्ड एंड सर पतंजलि, इट इज 7 कॉम्बो रेडी टू ब्लास्ट दिस नाउ। कल की जो इंडेक्स की टाइमिंग है 10:05 से 10:10, 12:05 टू 12:10, एंड द सुपर गोल्डन टाइम for index is 9:35 to 9:40 a.m. And then XAU USD gold, it is the magical candle time for 31st March. और एवरी डे यू विल गेट दिस टाइम इन माय फ्री टेलीग्राम। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दे रखा है। यू कैन गो एंड ज्वाइन माय फ्री टेलीग्राम वेयर यू विल गेट एवरी डे लेबल्स, यू विल गेट, जहां आपको एवरी डे की लेबल्स मिलेगी कि कौन सी लेबल्स पर क्या करनी है। यू विल गेट एवरी डे लेबल्स देयर। Maruti labels buy at above this, sell at below this. It is your target. Titan buy at above this, sell at below this. Torrent Pharma buy at above this, sell at below this. You will get all the labels in my free telegram community. So thanks a lot. ये थी मेरी वीकली फोरकास्ट। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी हो, यू कैन ऑल्सो लाइक you can also like my video. Now, thanks a lot. Have a nice day. Wishing all of you happy Chaitra Navratri and also Gudi Padwa. Thanks a lot.